Hello everyone, welcome to my another vlog and it's a very beautiful morning out here. तो आज हम लोग जा रहे हैं जगदलपुर जो कि रायपुर से अराउंड 300 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. तो चलिए चलते हैं जगदलपुर. So it's 7 o'clock, 8 o'clock. We have already hit the road. गाड़ी सुबह सुबह ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और होता है. तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 2 o'clock हम लोग पहुँचेंगे जगदलपुर. ये हम लोग फिलहाल तो है फ्रेश एयर में हम लोग ड्राइव का मज़ा लेते हैं. अभी तक के सफ़र में हमें जो भी रोड्स मिले, रास्ते मिले हैं, दे आर रियली गुड. मोस्टली थोड़े बहुत रास्ते हमें जो है बीच में ख़राब मिले थे, but most of the parts the roads are good and smooth and I'm really enjoying driving on these roads. तो ये है केऊन, ऐसे हम केऊन बोलते हैं और ये अक्सर जंगलों में मिलता है. झारखंड में बहुत मिलता है हमारा. बहुत ही टेस्टी होता है बट फ़िलहाल ये उतना टेस्टी नहीं है. कैसा लग रहा है? ठीक है, मीठा नहीं है. We have reached केशकाल घाटी which is around 5 kilometers and ये घाटी काफ़ी खूबसूरत है. यहाँ पे आपको वॉल पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी फूल लगे हुए हैं. इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल. हाउएवर द टर्न्स हियर आर वेरी शार्प, तो थोड़ा सा संभल कर जो है यहाँ ड्राइव करना पड़ेगा. So after a long 8 hours journey, we finally reached our destination, the Dandami Luxury Resort, which is located at Chitrakoot, which is again around 20-25 kilometers away from Jagdalpur. This is the cottage we are going to stay tonight. And this is the back side, the balcony of the cottage, which is quite spacious and quite beautiful. And यहाँ से जो है हम जो waterfall है, चित्रकूट वाटरफॉल, उसको भी देख सकते हैं. फिलहाल करते हैं थोड़ा सा मैडम का फ़ोटो शूट. देखिए मैडम तो तैयार होके खड़ी है, तो लग जाओ भैया अपना काम में. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सुबह हो गई है एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग आउट हियर. अभी सूरज की हल्की हल्की रोशनी आनी स्टार्ट हुई है एंड हल्की हल्की ठंड भी है. जो एरिया है वो हल्का सा जंगल के जैसा है, तो एंड यू कैन हियर लॉट ऑफ बर्ड्स. चिड़िया काफ़ी सारे जंगल वाला एरिया है, सो इट्स एडिंग मोर ब्यूटी टू द होल एरिया.
and I can see a lot of different kinds of birds over here also. तो मेरे कैमरे पे तो कैप्चर नहीं हो पाएगी क्योंकि काफ़ी दूर दूर है. So it's time to visit the very famous Chitrakoot Waterfall. तो चलिए चलते हैं अंदर विजिट करने चित्रकूट वाटरफॉल. हम लोग फॉल के एंट्रेंस में पहुंच गए हैं. यहाँ से जो है फॉल का रास्ता जाता है. ये एंट्रेंस है. And this is the way to the fall. Chitrakoot Fall, the very famous Chitrakoot Fall of Chhattisgarh. Finally, it's time to say goodbye to this wonderful place. I hope you guys have liked my vlog, my video, and I hope I'll see you guys very soon in my next vlog. So until then, bye bye.